नेक्स्ट, बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. India has its own well-developed alternate system of healthcare, namely Ayush, Ayurveda. It consists of 6 systems: Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Naturopathy and Homeopathy. अब इसमें कहीं N नहीं आता, बट इसको भूल मत जाना. 6 systems हैं, 5 letters है, but 6 systems of medicines हैं. Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Naturopathy and Homeopathy. Important point है काफी. अभी ये तो आ ही सकता है कि ठीक है, मतलब फुल फॉर्म ऑफ आयुष 6 सिस्टम्स कौन से हैं, ठीक. दिस इज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अभी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब जनरल बात, अभी बाबा रामदेव ने कोरोना की कोई मेडिसिन निकाल दी थी, कोरोनिल, तो आयुष ने उनको लीगल नोटिस भेज दिया था. ये है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये हेल्थ केयर है. तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमने तो अभी तक बनाई नहीं कोई, हमने आपको परमिशन भी नहीं दी बनाने की, बिना इनके अप्रूवल के वो नहीं निकाल सकते थे, और उन्होंने निकाल दी. जो परमिशन ली गई थी वो टेस्टिंग की ली गई थी, इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए, कोविड की ट्रीटमेंट की मेडिसिन नहीं बनानी थी. तो इनका वरना मतलब जस्ट रीड वंस, रामदेव, बाबा रामदेव वर्सेस आयुष. तो हुआ था इनका आपस में, जब मतलब पहले उन्होंने, क्या कंपनी का नाम है बाबा रामदेव, पतंजलि, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी लॉन्च की, कोरोनिल जो उन्होंने लॉन्च करा था. फिर उसके बाद आयुष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि ये वैलिड नहीं है, इट इज नॉट अ क्योर. At present, there are 3,167 ISM hospitals, Indian system of medicine, 26,000 dispensaries, and as many as 7 lakh registered practitioners in India. ISM has huge potential and can solve a large part of our healthcare problems because they are effective, safe, and inexpensive. Effective, safe, and inexpensive. However, little efforts have been done to set up framework to standardize education or to promote research. Indian system of medicine. So most important, Ayush. A for Ayurveda, Y for Yoga, U Unani, Siddha, H में नेचुरोपैथी भी आता है, होम्योपैथी भी आता है. 6 systems of medicine. Indicators of health and health infrastructure. Health एक एस्पेक्ट है, health infrastructure एक चीज होती है. It is a well-known fact that India is the second largest populated country in the world, but still, health status of a great majority of the people is far from satisfactory as compared to China and other developed countries. Expenditure on health sector is just 4.8% of total GDP. It is extremely low as compared to other developed and developing countries. 4.8% of total GDP. India has about 17% of the world's population, but it bears a frightening 20% of the global burden of diseases. What is GBD, global burden of diseases? It is an indicator used by the experts to measure the number of people dying prematurely due to a particular disease, as well as the number of years spent by them in the state of disability owing to the disease. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि नॉर्मली कितने साल लोग जिएंगे, अगर उससे पहले डेथ हो गई, क्या किसी डिजीज की वजह से हुई, तो इफ जो GBD, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इट मेजर्स द
number of people dying prematurely due to a particular disease, as well as the number of years spent by them in the state of disability owing to that particular disease. In India, more than half of the GDP is accounted due to communicable diseases such as diarrhea, malaria and tuberculosis. इसको TB बोलते हैं. पॉपुलेशन हमारी 70% है, बट ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस का जो 20% हमारे पास है कि जो कंट्रीब्यूशन. Every year, around 5 lakh children die of waterborne diseases because of absence of clean drinking water. The danger of AIDS is also looming large. Malnutrition and inadequate supply of vaccines lead to death of 2.2 million children every year. क्या पढ़ रहे हैं हम? Indicators of health and health infrastructure. Okay. At present, less than 20% of the population utilizes public health facilities, and only 38% of PHCs have the required number of doctors, primary healthcare centers. Only 38% of the PHCs, कह रहे इतने सारे PHCs तो खुल गए, but only 38% of them have the required number of doctors, and only 30% of the PHCs have sufficient stock of medicines. Indicators of health in India in comparison with other countries. Infant mortality rate, India 38. देखो कंपैरिजन में मतलब बहुत ज्यादा है. अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट, यहाँ पे भी नंबर 1. बर्थ बाय स्किल्ड अटेंडेंट्स, डिलीवरी के टाइम कोई स्किल्ड अटेंडेंट था कि नहीं था, तो परसेंटेज 100% स्किल्ड अटेंडेंट्स के साथ ही 99. 26% without presence of skilled attendants. Infants immunized 87%. Health expenditure as a percentage of GDP, जो पहले हमने स्टडी करा था, that was total money spent on infrastructure. Now we are talking specifically about health infrastructure. So expenditure on health infrastructure only 4.7%. Government health, I'm only better than Sri Lanka. श्रीलंका से थोड़ा सा बेटर है, बट श्रीलंका की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितनी इंडिया की है, दूर दूर तक. गवर्नमेंट हेल्थ स्पेंडिंग टू टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट टोटल खर्चा कितना कर रही है, उसमें से कितना परसेंट हेल्थ पे कर रही है, तो 5%. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब लोगों को अपनी जेब से कितना पैसा खर्च करना पड़ता है एज एन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ 89%, बहुत बड़ा फिगर है कि मतलब 89% लोग अपनी जेब से, मतलब उनको फ्री ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर रही. 89% ऑफ द पीपल दे आर स्पेंडिंग फ्रॉम देयर ओन पॉकेट्स. तो गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करेगी तो इनको नहीं खर्च करना पड़ेगा ना. यहाँ देखो यूएसए में मेडिकल केयर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ओनली 21% ऑफ द पीपल हैव टू स्पेंड फ्रॉम देयर ओन पॉकेट. गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ देयर मेडिकल emergencies or treatments. तो just read once, data analysis आ सकता है. Indicators of health and health infrastructure. Next segment है rural urban divide, rich poor divide. Yeah, again due to the dominance of private sector in healthcare, that is the reason of this divide. अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा हॉस्पिटल्स बना रखे होते तो पुअर को भी सारी फैसिलिटीज मिल रही होती. People living in rural areas do not have sufficient health infrastructure. रूरल एरियाज में
जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सफिशिएंट नहीं है. This has led to differences in health status of people. 70% of India's population live in rural areas, but only 20% of total hospitals and 50% of total dispensaries are located in rural areas. 70% of India's population lives in rural areas. Only 20% of hospitals, जितने भी हॉस्पिटल्स के साथ 20% रूरल एरिया में है. 50% of total dispensaries रूरल एरिया में. Out of about 6.3 lakh beds in the government hospitals, only 30% beds are available in rural areas. कह रहे मेजॉरिटी पॉपुलेशन आपकी रूरल एरिया में है और मेजॉरिटी स्पेंडिंग आपकी अर्बन एरियाज में हो रही है. That doesn't make sense. गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट तो ऑब्वियसली प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मोटिव, तो उनको पता है कि वहां पे लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो वहां पे उनके लिए तो एक इन्वेस्टमेंट है ना. तो वी कांट ब्लेम द प्राइवेट सेक्टर, बट डेफिनेटली वी कैन होल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां पे. पीएचसीज जो बनाए हैं अगर अनमैन्ड है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है, प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, तो फायदा क्या उसका. वो तो फिर नाम के लिए हो गए ना, ऑन पेपर्स के दिखाने के लिए कि हमने इतने पीएचसीज बनाए. There are only 0.36 hospitals for every 1 lakh people. 1 लाख की पॉपुलेशन के लिए भी एक पूरा हॉस्पिटल रेशियो में नहीं आ रहा. 0.36. While urban areas have 3.6 hospitals for the same number of people. 3 urban areas में 3.6 hospital for same, for every 1 lakh we have 3.6 hospitals in urban areas. The PHCs located in rural areas do not even offer X-ray or blood testing facilities. अभी तो क्या होता है, डॉक्टर के पास जाओ, पहले आप ब्लड टेस्ट करा के लाओ, बाद में देखेंगे, वहीं से पता चल जाएगा आपको क्या बीमारी है क्या नहीं है. आपको कहीं दर्द हो गया, आप गए ऑर्थो के पास, तो उन्होंने बोला पहले आप एक्सरे करके दिखाओ, तो पता चलेगा फ्रैक्चर है कि नहीं है. तो बिना टेस्ट के तो कंक्लूजन ड्रॉ करना बहुत डिफिकल्ट है. पीएचसी के पास ये फैसिलिटीज ही नहीं है which constitute basic healthcare. States like Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh are relatively lagging behind in healthcare facilities. In the rural areas, the percentage of people who have no access to proper healthcare facilities has increased over the last few years. In the rural areas, the percentage of people who have no access to proper healthcare facilities has increased over the last few years. Villagers have no access to any specialized medical care like pediatrics, gyno, anesthesia, obstetrics. Villagers have no access to any specialized मेडिकल केयर. गाइनीज नहीं है, जो मतलब स्पेशलाइज्ड स्टाफ नहीं है कुछ प्रॉब्लम्स के लिए. इवन दो 380 recognized medical colleges produce 44,000 medical graduates every year. The shortage of doctors in rural areas persists. यार बेचारे 1-1 करोड़ खर्च करके डॉक्टर बनते हैं, तो बड़ा मुश्किल होगा ना कि बहुत कम होते हैं ऐसे who opt for going to a rural area. उनको देखिए थोड़ी रिकवरी भी तो करनी है. 20% of these graduates इंडिया से ही चले जाते हैं, leave the country for better monetary prospects, and many opt for private hospitals located in the urban areas. The poorest 20% of Indians living in both urban and rural areas spend 12% of their income on healthcare, and rich spend only 2%. मतलब as a percentage of their income. अब क्योंकि रिच पीपल की इनकम ज्यादा होती है, तो एज अ परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंट ऑन हेल्थ केयर उनकी 2% है. आप
1 लाख कमा रहे हो, 2,000 खर्च कर दिए, 2% है। आप 5,000 कमा रहे हो और आपने 2,000 खर्च कर दिए, तो वो तो 40% हो गया ना। तो वैसे परसेंटेज की बात कर रहे हैं। अब ट्रीटमेंट पे एज अ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम, तो 12% हेल्थ पे ही चला जाता है। रिच स्पेंड ओनली 2%. दिस इज जस्ट एन एवरेज. Due to insufficient facilities in government hospitals, poor are driven to private hospitals. Insufficient facilities in government hospitals, which make them indebted forever. अब फाइनेंशियली स्ट्रांग है नहीं गवर्नमेंट, अब जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि क्रिटिकल केयर चाहिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वो प्रोवाइड नहीं हो रही, तो वो होगा ना कि यार जितने मर्जी पैसे खर्च हो, ट्रीटमेंट तो करनी ही पड़ेगी, और उनको लोन्स बोरो करने पड़ जाते हैं, दे रिमेन इंडेटेड फॉर एवर. Many have to sell their land or even pledge their children to afford treatment. The rich poor divide. There is a sharp divide between the urban and the rural healthcare in India. And if we continue to ignore this deepening divide, we run the risk of threatening the socio-economic foundation of our country. The government has to take the necessary steps. Insufficient health infrastructure in rural areas, rural urban divide. Okay.